आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वैंकूवर से वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। अब इमरान खान की रिपोर्ट पढ़ो। दिल ठीक, जिगर ठीक, खून ठीक, गुर्दे ठीक, टांग पर कोई जख्म नहीं, मगर पेशाब में कोकीन और शराब। Günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Tebessüm sadakadır. Kasılarak yürüme. Bağırarak konuşma. लेकिन मई 1998 उक्रेन तो वो भी कहते हैं ना जी कि मेरी हुकूमत के अंदर ये धमाके हुए, एटमी धमाके। अरे तो तुमने बनाए था तो मुर्गी तो ज़िबा कर नहीं सकते। अच्छा, हाँ, पटाखा तो तुम फोड़ नहीं सकते। जिस तरह भुट्टो साहब कहते कि घास खाएंगे एटम बनाएंगे। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वैंकूवर से वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वैंकूवर से वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आज का शो हम क्लोवरडेल से आपको दिखाएंगे। ये कलेक्टर्स कार्स जो हैं उनकी एक नुमाइश हो रही है। आइए हम इस शो को वहाँ से शुरू करते हैं। Okay, we are with Surrey police force, and how do you, I'm here to look for watch this show, antique cars, collectors cars. You want to say something? You are just coming out of there. It's a great day for the car show. It is, yeah. So you like it? People are quietly watching and looking for the things. Definitely, we're lucky to be a part of it. So. Oh, that's very good. Thank you very much being on my show. My show is on Shaw TV. Thank you very much. Take care. Thank you. Thank you. Bye. आप देख रहे हैं वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान, क्लोवरडेल जो कि सरे का सबब है, बिजनेस सेंटर है सिटी ऑफ सरे का। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो क्लोवरडेल फेयर ग्राउंड है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एग्जीबिशंस लगती रहती हैं। हम आपको आज जो फोर्ड कंपनी के जो लवर्स हैं, जिनमें फोर्ड मस्टैंग ख़ास तौर पर और बहुत ओल्डर मॉडल जो हैं वो भी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। आइए हम इन मॉडल्स की एक वीडियो बनाते हैं और साथ में आपको ये दिखाते हैं कि ये मॉडल जो हैं कितने अच्छे और नीट तरीके से रखे गए हैं। इनमें कुछ कलेक्टर्स प्लेट हैं जिनको एक स्पेशल इंस्पेक्शंस के बाद इन्हें कलेक्टर्स प्लेट का नंबर दर्जा दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। और आप आज सनी डे है, सुबह में थोड़ी सी खुनकी थी लेकिन इस वक्त कुछ धूप है, लोग निकले हुए हैं। आइए हम गाड़ियों की कुछ देखते हुए चलते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि लोग जो हैं वो विंटर में घर में गैराज में जो गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं तो समर में आके
उसकी जो एग्जीबिशन होती है वो भी एक देखने वाली चीज़ है, इसी तरह जैसे आप दिल अपना पाकिस्तान देखते हैं। जी नाज़रीन, ये फोर्ड मस्टैंग आप देख रहे हैं, ये एक मॉडल जो 50 लीटर की गाड़ी है, और इसके आप देखें कि गाड़ियाँ किस तरह से इवॉल्व हुई हैं, और ये कलेक्टर्स वाली जो गाड़ियाँ हैं उनमें देखें कि किस तरह से हाउ नीटली दे हैव केप्ट द engines and they drive only in the summer, and people love their cars so beautifully, so nice and clean. Another one, and look at this bottle they have, all weather solvent. They have a bottle of all weather solvent there, right tucked in there to clean the plugs, maybe just in case at that time. And now the technology is changing, right? Technology has changed to the electric cars. Ford is building electric cars, and those electric cars are future. People like to have electric cars, and those cars are very reliable, and they are the cost efficient too. So these cars are very good, and you can see those cars. I love to see this, all these cars, mashallah. Very good, very good. Oh, this is a little mechanic, Ford mechanic, and tired of working this on this car. They have a working mat. They don't want to ruin the apron or apron mats, and yeah, it's a beautiful. That's the beauty. So yes, people have they have put the love in their car, and working throughout the winter, and it's time to show off. And there we see some pictures of this car when it was being worked on. This is painting being happening. Yeah, it's all good. Collector's cars. This is a beautiful British Columbia 1970 Ford Mustangs sports roof, and it has all the restoration by Classic Customs, Vancouver, BC. Engine built by Darrell Emery. Oh my, see, look at this. All these cars have uniqueness in there. The owners have built the cars in a way that it looks almost new. With the new parts, designing is such that it looks so beautiful. This is how people are cleaning, keeping it up. Oh, this is California special. Oh, well, there you go. That's awesome. Yes. Oh, I need a 48.2. Oh, I got one right there. Oh, wow. This is interesting. Yeah, that's good. Okay, I am with Jai Pino. He is a Greater Vancouver Mustang Association representative here. He will tell me about these cars a little bit, history of these collectors' cars. Jai, welcome to my show. It's called DAPTV, Dil Apna Pakistan. You want to say something about this, the cars and how they do the renovations and all that? All right, absolutely. Well, this is a 1968 Mustang. Yeah. Specifically, the model is a California Special. Right. As you will see at the back, there's a script that says California Special. Right. So it differs from, it's different than the other California Special, than the other Mustangs. They only made them in 1968. Okay. And in 1968, they only made 3,867 of Okay. these cars, and that's all there is.
The engine you could get in all configurations in those days, 6 cylinders, a 289, which is what this is. Most of them were 289, 302, and even there were 10 of them that were a 428 Super Cobra jet. Very rare, and the value of those Cobra jet would be upwards of $250,000 nowadays and age. Oh my goodness. This one really is just a very basic little Mustang. And however, in 1968, this is when the competition Started. was coming about. You know, you had the Firebird and the Camaros and the Mopar products coming out. So the Southern California dealerships, they got together and they convinced Ford to have a special model to up their sales. They had a special model just for the California dealerships. Very So good. Ford agreed to it, and what they've done basically is they've taken a coupe Mustang, very simple one like mine, although they all named GTCS, mine is not a GT, but they just took a simple coupe and then they started adding Shelby parts to it. So you got a grilled, Yeah. in the grill there's no running horse, Okay. like the other 68 Mustang, like this The one. running horse, You will yeah. see there's a running horse, not this one. yes. Instead they add fog lights, Okay. specific to the California Special, Okay. Okay. and to the 1968 Shelby. Very good. Then the hood, right? Hood has the lights. I So see. I the- noticed. So you can. Lock them. So this is just like the 68, like the 68 Shelby. Yeah. And only to the specific to the California Special. My goodness. These are signal light. Yeah. So when you turn on your signal light from the dash, from the driver's position, you can see that your signal lights It's are on. working. Oh, I see. Okay. That's Okay. it. So then they put a scoop. So they had a special striping system Yes. just Yes. for the California Special. Yeah, I noticed that. Yeah. They got these scoop, which are similar to the Shelby scoop. Okay. Except the Shelby scoops were functional. They were used to ram air into the brakes. These ones are not functional. They're just because they're beautiful. They are That's all. beautiful. Oh, I Yes. see. Okay. Okay. So okay. and then of course you got the special Yeah. California Special. Yeah, I saw that Strip. one. Yeah, I saw that one. And yeah. the trunk, and this what we call a ducktail here. Yeah, ducktail. So these were again stolen from the Shelby. Okay. So these were Shelby trunks and Shelby tail lights, of course. Oh, I see. Okay. Okay. Now Nice. the Shelby tail lights were actually from a 1965 Thunderbird. Right. So, 1965, those are the same on the Thunderbird, are the same tail lights as the 1968 Shelby and the 1968 California Special. Thank you. Thank So you. there it is in a nutshell. There were only 3,867 of them built, That's nice. and this is one of those. So when they build them, special to the California for the California dealerships, they built the first 2,000. They were built in California at the San Jose. आइन बनता है, टूट जाता है, फिर आइन टूटता है, उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं। कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? और मुल्क तोड़ने वाले देखें आप, सितम ज़रीफी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहे हैं? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को, हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, उसको मुल्क बदर कर दिया,
उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ियां लगाई, उसको काल कोर्ट में बंद किया। आप देखिए, आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जंगालों से नहीं बनती थी, मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। लेकिन मई 1998 वो क्रेडिट तो वो भी कहते हैं ना जी कि मेरी हुकूमत के अंदर ये धमाके हुए, एटमी धमाके। अरे तो तुमने बनाए था, तो मुर्गी तो जगह कर नहीं सकते। अच्छा, हाँ, पटाखा तो तुम फोड़ नहीं सकते। जिस तरह भुट्टो साहब कहते कि घास खाएंगे एटम बनाएंगे, भुट्टो साहब ने घास खाएंगे एटम बनाया। अंडे पराठे खा के सुई तो आज तक बनी नहीं है 65 साल में इस मुल्क के अंदर। सीने की सुई तो अमेरिका चाइना से आती है, बाइसिकल तो चाइना से आती है, छोटी सी मोटरसाइकिल तो चाइना से आती है। तो वो क्या अंडे पराठे खा के उन्होंने वो सुई बनाई, एटम बम बनाया हमने, हमारे साथियों ने, हमने कुर्बानियां दी अपने खानदान की, हमने अपने फैमिली की लाइफ तबाह कर दी। Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Tebessüm sadakadır. Kasılarak yürüme. Bağırarak konuşma. Herhalde ben biraz bağırdım, Allah affetsin. İlim meclislerine katıl. Cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk. Az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et. Festakim kema ümirt. Bütün işlerinizde istişare ediniz. Allah'ın hükmü bu. Doğru arkadaşlar seç. Tembel olma. Acele etme. Şefkatli ve ikram sever ol. Başa gelene sabret. Men sabera zafera. आप मुस्लिम लीग नून के लीडर्स को सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में हमने अपने लीडर को नहीं छोड़ा। जी, मुश्किल वक्त में उनके लीडर उनको छोड़ के लंदन चले गए थे, उससे पहले सऊदी अरब चले गए थे।
तो उन्होंने मुस्लिम लीग के लीडर जो हैं वो माशाल्लाह खुद इतने जीरक हैं, उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया कि कोई मुझे छोड़े। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो खुद ही माशाल्लाह इतनी वो जहमत में और इतना इम्तिहान में वो कहते हैं पिछली बार जब मैं जलावतन हुआ उससे पहले नारा लगाते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ है, मैंने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था साथ, भाप गए थे मियाँ साहब। हाँ नहीं वो तो ये भी कहते हैं ना कि उन्होंने मियाँ साहब ने सबको बुला के कमरे की लाइट ऑफ की और कहा कि जिसने मुझे छोड़ना है वो छोड़ के चला जाए। जब लाइट ऑन की गई तो वो बंदे सारे ही वहां बैठे थे, मियाँ साहब गायब थे। तौबा 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 तौबा। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वैंकूवर से वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। जी नाज़रीन, समर में कार शोज़ यहाँ पे वैंकूवर में क्लोवरडेल में इसी तरह होते रहते हैं, लेकिन ये समर कार शो नहीं है। ये जो है ये क्लोवरडेल म्यूज़ियम का एक हिस्सा है जहाँ पे ये गाड़ी रखी गई है और बहुत खूबसूरत गाड़ी लगता है। क़ायद आज़म के पास भी यही गाड़ी थी और इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स और हिस्ट्री है यहाँ पे। हम आएंगे, ये प्रिंटिंग प्रेस की हिस्ट्री लग रही है, न्यूज़ इन प्रिंट, या बिल्कुल ये प्रिंटिंग प्रेस लग रहा है और इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी प्रिंट करने के लिए। और ये देखें, ये भी यहाँ पे बहुत सारी जो हैं चीज़ें रखी गई हैं और सरे जो है अपने जैसे इवॉल्व हुआ है और बिल्कुल एक गांव का मंजर पेश कर रहा है यहाँ पे। और ये आ गई है और बगी आ गई है यहाँ पे और इसके साथ साथ आप ये देखें कि ये फायर इंजन भी आ गया है। ये किसी ज़माने में फायर इंजन ऐसे होते थे और कार्ड पे होते थे और वो फायर हाइड्रेंट ने अपनी शक्ल ज़्यादा नहीं बदली, लेकिन फायर हाइड्रेंट भी इसी का फायर सिस्टम का हिस्सा है जो सिटीज़ में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट जो है आपको जो अगली एपिसोड जो है हमारी वो इंशाल्लाह इस पर होगी सरे के बिज़नेस सेंटर क्लोवरडेल से। क्लोवरडेल की जो हिस्ट्री है वो सरे म्यूज़ियम में, और बल्कि सरे की हिस्ट्री जो है वो इस म्यूज़ियम में जमा की गई है, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये। तो ज़रूर विज़िट करें, बच्चों के साथ आएँ। लोग संडेज़ को आते हैं यहाँ पे और विज़िट करते हैं और अपने बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फार्म इक्विपमेंट जो है उसी तरह से है। देखें किस तरह से फार्म इक्विपमेंट को भी रखा गया है, मिल्क के जग और दूसरी चीज़ें। और इसमें यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि हम बैक हिस्ट्री में आ गए और वो हिस्ट्री जो है वो प्रिजर्व करने से होती है, ना कि डिस्ट्रॉय करने से। ये पुरानी जो है लेथ मशीन है और इसके साथ साथ वो घोड़ों की बग्गी, वुड वर्क का बहुत काम होता था यहाँ पे। और वुड वर्कर जो हैं वो इस तरह से थके हारे बैठे हैं। ये रेल के भी इंजन के भी वर्कर लग रहे हैं, लेकिन ये कि डेफिनेटली ये किसी लंबर फैक्ट्री के वर्कर हैं। बहुत हार्ड वर्क किया लोगों ने तरक्की को पाने के लिए। इसी तरह से जैसे गाँव में इसी तरह से तरक्की करती हैं, वो सिंसियरली वर्क करती हैं अपने
अपने कौम के लिए। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। दोस्तों, एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि दवाएं लेने के बाद भी उनकी मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और नीचे नहीं आ रहा है। उनकी लाइफ के लिए मैं डर लग रहा है। ये कहते कहते वो रोने लगे। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं एक नुस्खा बताता हूँ, उसे तुरंत बनाकर दो, और एक एक्यूप्रेशर भी बता देता हूँ जो कितना भी बीपी हाई हो जाए तुरंत काम करेगा और 5-7 मिनट में ही बीपी नॉर्मल आ जाएगा। मैंने कहा कि 1 कटोरी पुदीने की पत्तियां मिक्सी में डालो, साथ में 2-3 चुटकी काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल लो और इसको पीस लो। पुदीने की चटनी बन जाएगी। पुदीने की चटनी की 2-3 चम्मच तुरंत इनको खिलाओ। उन्होंने कहा कि हम अभी बनाकर इसे खिलाते हैं। फटाफट 2 मिनट में ही उन्होंने चटनी तैयार कर ली और तुरंत उनको खिला दी। 5-7 मिनट में ही उनका आराम आने लग गया। तब वो मुझसे कहने लगे कि पुदीने की चटनी कभी कभी हम खाते हैं, पर ये इतनी ज़बरदस्त दवा है, हमको मालूम नहीं था। मैंने कहा कि ये घरेलू नुस्खे बहुत तेज़ी से काम करते हैं और बनाने और यूज़ करने में भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन बस हमको इनके बारे में मालूम नहीं होता। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। अब आप ऐसा करना कि अभी तो हर 2 घंटे से 1-1 चम्मच ये पुदीने की चटनी को खिलाना, और फिर कल से दोनों टाइम खाना खाने के साथ इसे खिलाना। इससे बीपी नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इससे पेट भी साफ रहेगा और गैस भी नहीं बनेगी, क्योंकि पेट की गड़बड़ी और गैस से भी कई बार बीपी हो जाता है। तो अगर इनको इसकी वजह से बीपी बढ़ रहा होगा तो वो प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि ज़रा कपड़े सुखाने की 4 चिमटियाँ ले आइए ताकि हाई बीपी का एक्यूप्रेशर भी कर दें। वो चिमटियाँ ले आए। मैंने एक चिमटी उनके बाएं हाथ की बीच की उंगली में लगा दी और दूसरी चिमटी उसी हाथ की सबसे छोटी उंगली में लगा दी। इसी तरह से तीसरी चिमटी उनके दाएं हाथ की बीच की उंगली में लगा दी और चौथी चिमटी दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में इस तरह से लगा दी। मैंने उनसे कहा कि जैसे ही आपको अनईजी लगने लगे तो आप बता देना, इनको उतार देंगे। 5 मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि अनईजी लग रहा है। तब मैंने उन चिमटियों को उतार दिया और फिर बीपी नापा तो बीपी नॉर्मल था। सब लोग ये देखकर चकित रह गए। मैंने कहा कभी भी ऐसी बात हो तो इसे तुरंत कर डालना और इसे रोजाना दिन में 1 बार इसी तरह से करना। बीपी हमेशा नॉर्मल बना रहेगा, जान का खतरा भी नहीं रहेगा। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनकी माँ की जान अब खतरे से बाहर थी। तो दोस्तों, आप भी हाई बीपी के इस बेहद आसान इलाज को यूज कीजिए, अपनी लाइफ सेव कीजिए और लाइफ बढ़ाइए। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान।